Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to discuss about the soil forming factors. So before I start, I want to tell you something guys. यार प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो यार, और अगर नहीं लग रहा है तो प्लीज कमेंट बिलो, ओके, दैट हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ सो दैट आई कैन गेट यू मोर यूजफुल वीडियोज. क्योंकि एक बात बोलूं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेट करती रहती है कि हम और भी अच्छा कंटेंट बना के आपके लिए ला सकें. वैसे बनाने को तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मेकअप हो गया, कॉमेडी हो गया, या कुछ भी, पर जिन्होंने भी एजुकेशनल वाला चैनल ओपन किया हुआ है उनका मेन मोटिव यही होता है कि जो भी जरूरतमंद बच्चे हों उन्हें उनसे अपना नॉलेज शेयर कर सके. और मेरा इस चैनल का मोटो भी यही है कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उसे मैं अपने सारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं और उनके लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सकूं. सो प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट दैट एनकरेज अस थ्रू योर व्यूज, योर डिसलाइक्स, लाइक, शेयर, कमेंट, suggestions and subscriptions. Okay, it will hardly take 1 minute time. So please give your 1 minute time to us. So without wasting much time, let's start our class, that is soil forming factors. Okay, so before coming to soil forming factors, I want to tell you something about soil formation. Soil कैसे form होता है. Okay, so there are two phases of soil formation. Okay, there are two phases. Soil formation होगा, उसके लिए दो phases हैं. पहला वेदरिंग, ओके, वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन भी आप इसको बोल सकते हो, डिसइंटीग्रेशन. ओके, सो वेदरिंग हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे. वेदरिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये भी एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉइल का. ओके, सो वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स. ओके, तो जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, बड़ा बड़ा मिनरल्स होता है, वो सब क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होके छोटा छोटा पत्थर या छोटा छोटा मिनरल्स बन जाते हैं, जिससे कि ग्रेजुअली बाय द डिफरेंट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड डिफरेंट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, जिसमें से ट्रू सॉइल बन के तैयार होता है. ओके, सो again I am repeating, there are two phases. One is weathering of the rocks and minerals, and the second phase is formation or development of true soil by different soil forming factors and different soil forming processes, जिसको हम pedogenic processes भी बोलते हैं. Pedogenic processes. Okay, so soil forming processes are also known as pedogenic processes. Okay, so this much is clear. So all the pedogenic processes we have already discussed, okay, earlier. Then coming to the next one, soil forming factors. Okay, so at any specific location on the surface of earth, there are main 5 factors, okay, that act simultaneously to produce the soil. तो soil surface के ऊपर यही 5 factors हैं जो कि एक साथ काम करते हैं सॉइल बनाने के लिए. तो 5 फैक्टर्स क्या क्या है. पहला वन, पेरेंट मटेरियल्स. ओके, द फर्स्ट वन इज पेरेंट मटेरियल्स. सो आई हैव पुट हियर वन सिंबल फॉर पेरेंट मटेरियल, दैट इज स्मॉल p. देन सेकेंड वन इज क्लाइमेट. ओके, देन द थर्ड वन इज रिलीफ और टोपोग्राफी. ओके, दैट इज स्लोपीनेस. यू कैन राइट स्लोपीनेस. ओके, then the fourth one is biosphere or organisms. Okay, that's why I have put the symbol O here, O for organisms. Okay, then the last one is time. Okay, and its symbol is like T. Okay, small t. Okay, so these are the 5 factors actually which are acting simultaneously to produce the soil. Okay, and all these factors, they are interrelated and complement each other. Okay, then coming to the scientist Jenny. Okay, he is one of the scientists and he expressed the relationship of these 5 factors to the soil properties by an expression or by an equation
like this. Okay, that is S equal to factor of climate, relief, organism or biosphere, parent material and time. Okay, so S means any soil properties. It may be pH, it may be texture, it may be organic matter, anything. Okay, so any soil property is a factor of climate, relief, organism, parent material and time. Okay, so coming to these factors. Okay, so Jenny, he divided these factors into two groups. Okay, Jenny, he has divided these factors, 5 factors, into two groups. Okay, one is active factor and another one is passive factor. Okay, so what is active factor? He has classified the climate and organism in active factor group and relief, parent material and time in passive factor group. Okay, so what is active factor? Active factor means these are the agents that supply the energy. Okay, so they supply energy, okay, for the development of soil. सॉइल जब फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो एनर्जी यही दो चीजें ला करके देते हैं, यही दो फैक्टर्स ला करके देते हैं. सो इसीलिए हम उन्हें एक्टिव फैक्टर्स बोलते हैं. ओके, सो दिस मच इज क्लियर टू यू. देन नेक्स्ट कमिंग टू पैसिव फैक्टर. ओके, सो what are the passive factors? What are they? Okay, so passive factors are the factors that represent the source as well as the conditions. Okay, so passive factors are the source of soil formation as well as the conditions affecting the soil formation. Okay, so they are the relief, parent material and time. Here source is the parent material from which the soil will be formed, and relief and relief and time, these two are the conditions that are affecting the soil formation. Okay, so now we will discuss one by one about all the 5 factors in a brief. Okay, so starting with the climate. Okay, so how climate is affecting the soil formation. Okay, so the main dominant factor under climate is the rainfall and the temperature. Okay, so how the rainfall and the temperature they are affecting, we will see one by one. So starting with the rainfall, the first factor under climate. So it primarily regulates the moisture air regime in the soil. Rainfall regulates the moisture air regime of the soil. How? Let's say today there is more rainfall. Okay, that means whatever the soil pores will be there, most of the soil pores will be filled with water because of rainfall. Yes or no? Okay, and very less soil pores or even no soil pores is filled with air. Okay, so after few days there will be plant offtake. Okay, and there will be evapotranspiration. Okay, so because of these two things, what will happen? From these pores water will be evaporated or water will be uptaken by the plant. Okay, and the holes will be filled with air. So in this way, the rainfall, it regulates the moisture and air regime in the soil. Okay, this is the first thing. Then the second thing is it directly affects the formation of different types of soil. Okay, what kind of soil? Alkaline soil or saline soil or acidic soil. Okay, rainfall, it directly affects the formation of these kind of soil. How? If in a place there will be more rainfall, okay, what will happen? There will be leaching of the bases. Okay, all the bases will get
leached down, okay, or percolated down, or there will be loss of the bases from the soil surface, okay, and they will get deposited in the lower layer or bottom layer. If the bases will be deposited in the bottom layer and there will be loss or there will be no base on the surface layer, that will lead to the formation of acidic soil. Okay, there will be formation of acidic soil. उस जगह पे एसिडिक सॉइल फॉर्मेशन होगा. ओके, किस जगह पे? जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है, रेनफॉल हाई. ओके, हाई रेनफॉल एरिया में एसिडिक सॉइल ज्यादा फॉर्मेशन होगा. Similarly, in the low rainfall area, there will be accumulation of lime or salts, different types of salts, and there will be formation of alkaline or saline kind of soil. Okay, so these two soil will be formed in low rainfall areas. Okay, so this much is clear to you. So what is the effect of rainfall is now over. Okay, then coming to the effect of temperature. So temperature directly influences the organic matter decomposition, microbial activities and many more activities inside the soil. Okay, so आपने जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शंस देखा होगा तो उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा, एक ऑप्टिमम या फेवरेबल कंडीशन करके लिखा होता है. ऐसे करके कुछ लिखा होता है, ऑप्टिमम और favorable condition. Okay, so for operation of any kind of reaction there is some optimum or favorable condition. Okay, so the same goes inside the soil also. Okay, so inside the soil if there will be any kind of microbial activity, any kind of chemical reactions, any kind of organic matter decomposition, okay, they needs a optimum or favorable condition. Okay, so what comes under this? The optimum pH, optimum temperature, optimum water or optimum water content or moisture content. Okay, so these things are very common under optimum or favorable conditions. And among these three, temperature plays a very major role. Okay, for any kind of activities to get operated. Okay, how? Here I am saying for soil formation, temperature plays a major role because the evapotranspiration phenomena, the rainfall, the efficiency of precipitation or rainfall, everything is determined or everything is influenced by the temperature only. So this much is for today. अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए. अगर वीडियो सच में अगर जेन्युइनली आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं. और प्लीज अपना सजेशंस, वैल्यूएबल सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.